So hey guys, welcome back to a new video and today I have come up with a great and amazing framework जो कि आपके बिजनेस को, आपके स्टार्टअप को यूनिक बनाने में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने में और आपके वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करेगा, राइट? एंड द फ्रेमवर्क दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज VRIO, VRIO. This is an amazing analysis. This is an amazing framework that each and every business that has turned big has used during its initial days, right? And ये शायद से काफ़ी स्मॉल स्टेज पे, काफ़ी स्मॉल बिजनेस में अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन this can definitely help you in planning, in projecting and in creating a great business plan. Because when you're a startup, आप सिर्फ 1 या 2 महीने के नहीं सोचते, right? You have 3 years, 5 years projections and you are looking to scale massively, right? जो लोग, जो traditional companies 10 years, 15 years में scale achieve करते, you are looking towards achieving that scale within 3 to 4 years, right? So this analysis, this framework is going to be amazing. And इसी के साथ साथ एक और एक analysis short में देखने वाले, that is SWOT analysis. उसके बारे में तो almost सबको पता है, तो जिनको नहीं पता तो ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना. So today we are going to learn mainly VRIO analysis and along with that another framework called as SWOT analysis. So if you are interested in knowing more about these frameworks, then do watch this video till the end. So hey guys, my name is Siddhant and welcome back to a new video. As a startup, you always have to do internal analysis, right? Internal analysis करना काफी important है, because unless and until you know yourself better, you won't be able to create value, you won't be able to utilize your whole potential and serve your customers. And उसके लिए ये VRIO framework काफी important है. So what does it mean by VRIO? So V is for value, R is for rarity, I is for imitability and O is for organization. Now these 4 components are very much useful when it comes to internal analysis and also creating a great business plan, creating a sustainable business plan. तो एक बार आपको आपकी यूनिकनेस, आपके जो भी रिसोर्सेज है, जो भी आपके एडवांटेजेस है, वो आपको एक बार समझ में आ गए, then you can utilize them to your full potential and you can capitalize on them to create a great competitive advantage, right? So in today's world, there are about 61,000 registered startups in India, right? And there are thousands and thousands more that are being created globally on daily basis. तो आपको इन स्टार्टअप से अगर अलग कुछ करना है तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन एंड एक यूनिक ब्रांड पोजिशनिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड ये अगर आपको अचीव करना है तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके टीम को, आपके स्ट्रेंथ्स को, आपके बिजनेस प्लान को, आपके प्रोडक्ट को इंटरनली एनालाइज करना एंड समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेमवर्क. नाउ द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द VRIO framework is V, that is value. Now creating value for your customers is the first and foremost requirement for any startup. The first and the foremost reason for the failure of most of the startups is they create products and services which are not needed by the customers, right? So if you are not solving any of the customers problems, then the customers are not going to buy you, right? तो अगर आपको आपके customers के लिए कुछ value create करनी है तो आपको उनके पहले problems समझने पड़ेंगे and then you have to solve those problems in the best possible manner. Now here, while analyzing the value of your startup or your product, you have to ask yourself 2 questions. The first question is that what specific ability do you empower customers to take advantage of, right? आप ऐसी कौन सी specific value या specific power आप customers को देते हैं जो जिसका वो advantage उठा सकते हैं. The second question that you need to ask is what resources of value do you provide to the customers? Now these 2 basic questions will help you analyze whether your products or your services or your business is creating value in return for the customers, right? But let's not forget that this is not just one-sided, right? So whenever you're thinking about the value creation, you just don't need to think about the value, but you need to think about 2 more things. That is from the customer's perspective, that whether as a customer you are looking for this product, whether you are looking for this value and whether you are in need of this value. And the second perspective that you need to think from the customer's eyes is that why should the customer select you? Why should they select your solution? Are there any competitors? Is there any competition out there in the market जो आपसे उस चीज को, इस प्रॉब्लम को ज्यादा बेटर वे में या फिर ज्यादा अफोर्डेबल वे में solve कर रहे, right? So this is the value part, the first part of the VRIO framework, that is value, and it is the first and foremost important thing that as an entrepreneur you should be thinking while starting a startup. Now moving on to the second part of the VRIO framework, that is rarity. R stands for rarity. Now rarity is something that the resources or the values that you are providing to the customer, how rare are these resources, and अगर ये आप कुछ provide कर रहे हो customer को तो ये resources, ये values क्या competition भी provide कर सकती है. Like this can be the form of technology, that is the technology you're using is maybe patented or is it very rare, like or you're making some products out of some rare materials like graphene. तो graphene सबके पास available नहीं होता. So
are you creating some products or services out of some software or technology or some naturally available products which are very rare to find? So if you have got this value of rarity in your organization, then you will have a competitive advantage. If not, then others can exploit that same resources and create the same value for your customers as well, right? So now here you again need to ask yourself 3 questions to find out whether you have that point of rarity in your business. The first question that you need to ask is, what hard to obtain resources do you have at your disposal जो किसी और के पास नहीं है? The second question you need to ask is, what unique capabilities do you provide? And the third question that you need to ask yourself is, what part of your business or service or your product has low supply and high demand? Now these 3 things will actually help you determine the rarity, the factor of rarity in your business. मैं rarity और value के ऊपर इतना ज़्यादा stress इसलिए कर रहा हूँ because when you have that rarity and when you are creating a value, now that is the recipe for success, right? That promises that you will definitely be successful. And if not, then you should actually go back, you should brainstorm, you should bring in some of the rare components, you should again brainstorm and you should think of adding more value to your customers, right? And also value and rarity के case में ना, these two are mutually important, they are mutually dependent. If you are creating value which is not rare in any manner, then it is not going to be sustainable. आपको कोई भी copy करके आपको topple कर देगा. But if you have something rare and if you're providing something rare but it isn't of any value to the customers, then it is of no use, it is useless, right? So you should have that perfect combination of rarity and value which will create a recipe for success, right? Now moving on to the third point of the VRIO framework, that is imitability. Now this is similar to rarity, right? But rarity mein it was talking about resources, it was talking about internal resources, internal analysis, but imitability has to do with your competition, with your competitors, right? So can they imitate your product, your value, your services? So in order to create a strong competitive advantage, you got to have that non-imitability factor. Even you are creating a lot of value with rare resources, but if your competition, if your competitors are doing it better than you or they can imitate you, then your growth or your success will be very short-lived, right? तो अगर आपको आपकी imitability को अगर analyze करना है तो आपको इसमें 2 questions पूछने पड़ेंगे. The first question that you need to ask is, what is the cost of duplication of your organization solution or products or services, right? तो अगर आप जो भी provide कर रहे हो solution customers को, उसको अगर duplicate करना है, imitate करना है किसी भी competitor को, तो उसकी cost of imitation क्या है? The second question that you need to ask is there any similar product or service that currently exists in the market, right? Now moving on to the fourth and the last part of the VRIO framework, that is organization. Now organization point is very important because you can do innovation, you can create a lot of products, you can create a lot of value, you can have rare resources, but unless and until you have a great organizational structure and systems in place, your organization is not going to scale, it is not going to function very well in day-to-day operations, right? तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स का काफ़ी ध्यान रखना है. आपके बिजनेस में वर्क फ्लोज रिलायबल है या नहीं, आपके इसमें SOPs डिटरमाइंड है या नहीं, आपके अंदर हायरार्की डिटरमाइंड है या नहीं, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, राइट? सो ऑल ऑफ दीज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स शुड बी इन प्लेस to ensure that your resources, your rare factors are being utilized to the optimum potential, are utilized to the whole potential to create great products and services of great value. तो जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, VRIO is something that you can use for internal analysis of your organization or your company or your startup, right? लेकिन that is one of the limitations as well that comes with the framework that is just focused on the internal factors. लेकिन business में external factors भी होना काफ़ी important है, and that's the reason I've combined these 2 frameworks, that is VRIO and SWOT with each other in this video, right? क्योंकि SWOT जो है वो आधा internal and आधा external factors consider करता है, and also SWOT is very basic, उसमें ज़्यादा explain करने जैसा है नहीं, that I would make a separate video on SWOT, right? So now let's move on to the next basic framework that every entrepreneur actually knows, and अगर आप एक MBA graduate है, अगर आपको थोड़ा business का knowledge है तो आपको SWOT analysis के बारे में ज़रूर पता होगा. So now let's see what is SWOT. So now SWOT stands for strength, weakness, opportunities and threats. Now strength and weakness ये है internal analysis की चीज़ें, but opportunities and threats, these are something that you need to take the external factors into consideration while determining the opportunities and threats for your business, right? So now starting with the strength, as the word itself suggests, that it describes the strengths
द फैक्टर्स एट विच द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल्स, राइट। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्ट्रेंथ्स है जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं, राइट। सो इट कैन बी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, इट कैन बी लॉयल कस्टमर बेस, आपकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, आपके स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू मॉडल हो सकता है, आपका यूनिक टेक्नोलॉजी हो सकता है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी हो सकता है, एंड सो ऑन, राइट। तो ये सारे स्ट्रेंथ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास है, आपके बिजनेस के पास है, आपके स्ट्रेंथ के पास है, ये आते हैं स्ट्रेंथ वाले कॉलम में। नाउ मूविंग ऑन टू द वीकनेस कॉलम, नाउ अगेन वीकनेस इज समथिंग दैट एक्चुअली स्टॉप्स योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम परफॉर्मिंग एट द ऑप्टिमम लेवल। तो ये कुछ चीज़ें जो आपके बिजनेस में ड्रॉबैक्स है, राइट, एंड इसको अगर आप करेक्ट कर दोगे तो आपका बिजनेस ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन करेगा। तो ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, ये आपके मार्केटिंग में हो सकता है, आपका पुअर ब्रांडिंग है, पुअर मार्केटिंग है, या फिर आपके प्रोडक्ट में उतना दम नहीं है, आपकी टेक्नोलॉजी पेटेंटेड नहीं है, या फिर आपका कुछ प्रोडक्ट्स का बिजनेस है तो उसमें सप्लाई चेन में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपका रेवेन्यू मॉडल ठीक नहीं है तो आपके बिजनेस में लॉसेज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक बिजनेस की वीकनेसेस हो जाती है, राइट। नाउ दीज वर द 2 points of internal analysis. Now moving on to the next 2 points that are connected with the external analysis, and that is opportunities. Now opportunities are very important whenever you are running a startup. आपको opportunities को देखते आना चाहिए, आपको opportunities को determine करते आना चाहिए, because these are something that will help you project the growth of your startup, your business, right? And यही आपको आपके competition में competitive advantage देगा. The one great quality that every market leader, that every business leader, that every successful leader has is that he can see beyond the next turn, beyond the next curve. You should be able to see beyond the next curve. आपको अभी से कुछ opportunities देखते आने चाहिए जो बाकी के लोग नहीं देख सकते, right? So 5-10 years from now you should be able to visualize, you should be able to look at those opportunities जिनके ऊपर आप अभी से काम कर सकते हो, right? And you can create products and services to exploit those opportunities much faster and much earlier than your competitors, right? Now moving on to the fourth and the last part of the SWOT analysis, that is threats. Now threat refers to the factors that can potentially harm your organization. Now this can be in terms of operations, they can harm your operations, or they can harm your business economically, right? कि sales नहीं हो रहे, losses हो रहे हैं. Now this can be natural factors, or this can be also the external factors related to the competition, कि competition आपको beat कर देगा, या फिर अगर एग्रीटेक स्टार्टअप है तो उसमें नेचर का कोई भरोसा नहीं है कि नेचर कुछ कैलामिटीज़ हो गए तो आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आ गया। तो ये सारे थ्रेट्स एंड ये सारी चीज़ों को भी आपको कंसिडर करना है, फैक्टर इन करना है जब आप आपके बिजनेस प्लान को बना रहे हो, आपके बिजनेस के प्रोजेक्शंस को डिटरमाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे एक टेबल मैंने दिखाया, दैट इज द स्वॉट टेबल, जिसके अंदर हर एक चीज़ को अगर आपको एनालाइज करना है, सो यू कैन अगेन आस्क दीज टॉप 3 क्वेश्चंस इन ईच ऑफ दीज सेक्टर्स। तो स्ट्रेंथ्स में क्या पूछना है, वीकनेस में क्या पूछना है, थ्रेट्स में क्या पूछना है, अपॉर्चुनिटीज में क्या पूछना है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको VRIO फ्रेमवर्क एंड SWOT एनालिसिस का फ्रेमवर्क समझ में आया होगा। एंड लोग कहते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप ये थियरी के आगे है, ये सारे बिजनेस मॉडल्स, बिजनेस स्टडीज ये कुछ काम का नहीं है, इट इज़ प्रैक्टिकल थिंग। येस, इट इज़ डेफिनेटली प्रैक्टिकल, लेकिन अगर आपको ये बिजनेस फ्रेमवर्क्स, बिजनेस एनालिसिस के कुछ चीज़ें अगर आपको पता है ऑलरेडी, सो यू कैन मेक स्मार्ट डिसीजंस। एंड ये चीज़ें बनाई ही इसलिए गई है क्योंकि कि आप अपने बिजनेस मॉडल को ऑप्टिमाइज कर सके, एक अच्छा बिजनेस प्लान बना सके। एंड इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है। इफ यू आर जस्टिफाइंग योर बिजनेस प्लान, योर प्रोजेक्शंस टू द इन्वेस्टर्स बाय स्टेटिंग दीज फ्रेमवर्क्स, देन इन्वेस्टर्स काफ़ी इंप्रेस हो सकते हैं, बिकॉज दे नो दैट दिस पर्सन हैज एक्चुअली वेल थॉट थ्रू द प्रोसेस एंड उसने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में देखी है, एंड तभी वो ये प्रोजेक्शंस दे रहा है, एंड तभी वो ये थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ का एनालिसिस भी बता रहा है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज फ्रेमवर्क्स। मैंने इसके पहले भी काफ़ी सारे मार्केट रिसर्च के ऊपर फ्रेमवर्क्स के वीडियोज़ बनाए हैं, सो यू कैन गो एंड चेक दोज वीडियोज़ एज वेल. So guys, if you like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. So guys, I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.